Good morning, students. Today we are going to start with a new topic, that is fundamental accounting assumption. Now, fundamental accounting assumptions are those assumptions which are to be taken or which are to be presumed while writing down the book of accounts. And if the firm is not following those assumptions, then they have to disclose the reasons why they are not presuming those assumptions. So today we are going to talk about those three assumptions which we used to take while writing down the book of accounts. The first assumption we are talking about, that is going concern assumption. Now, going concern assumption says, according to this assumption, it is assumed that business shall continue for an indefinite period of time, and there is neither any intention nor any necessity to close down the business, nor scale down its operations significantly. Now, what does it mean says that whenever we are opening a firm or an organization, we start the business with this thought that we are not going to close down the business. कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट करता है वो इस ख्याल से नहीं स्टार्ट करता है कि आफ्टर सम डेज और आफ्टर फ्यू इयर्स आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन. जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा इस assumption पे स्टार्ट होगा that we are going to open up the business for an indefinite period of time, and there will be no intention, neither they have any intention to close down the business nor any necessity to reduce its operation. इस thought के साथ, इस mindset के साथ business स्टार्ट होता है. So whenever the business being started, कभी भी कोई business start होता है तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कंपनी क्या कहती है, okay, we are starting this product, after a few days we are going to close down this product. ऐसा कभी होता है? कभी आपने सुना? नहीं होता. तो गोइंग कंसर्न assumption का मतलब यही है, whenever the business is being started, ये कंपनी अज्यूम करके चलती है कि उसने बिजनेस जो खोला है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खोला है. कोई भी कंपनी ये assumption के साथ कभी नहीं स्टार्ट होती है that they are going to close down the business after few days or after few years. So going concern assumption यही कहता है कि whenever you are starting up the business, you have the mindset that you are starting the business for an indefinite period of time. Clear? So this is the meaning of going concern assumption. Now coming to the second assumption, that is consistency assumption. Now what does the consistency assumption says? According to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. Now what it states that whatever the practice, for example, if I have adopted one of the method of the accounting process, that practice or that method, once I have applied, I have to adopt that method year after year. I cannot change it afterwards. For example, let us tell you an example, and with that example you are able to understand. Out of the two methods of charging depreciation, now depreciation का मतलब होता है that is being charged against the assets. Depreciation का मतलब होता है that is being charged against the assets, where the value of the assets decreases as the certain number of years of time has been spent on. तो हर साल क्या होता है, जो आपने assets खरीदे हैं उसकी वैल्यू depreciate करती है, मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है. तो उस depreciation को चार्ज करने के लिए दो मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 में, that is written down value method and straight line method. Now according to the consistency assumption, दोनों में से अगर कोई आपने एक मेथड चूज कर लिया है फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर अ सर्टेन एसेट, तो फिर फर्म उस मेथड को चेंज नहीं कर सकता. वंस यू हैव अडॉप्टेड एनी वन ऑफ द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन of a certain asset, then according to this assumption you cannot change the way of charging the depreciation. So once you have chosen the method of charging the depreciation, you cannot change it. You have to apply consistently year after year. तो जो मेथड आपने इस साल चूज किया है वही मेथड आप नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करेंगे. आप हर साल मेथड चेंज नहीं कर सकते कि आपने फर्स्ट ईयर में रिटन डाउन वैल्यू मेथड किया, सेकेंड ईयर में स्ट्रेट डाउन मेथड किया. नो, अगर आपने इस साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड चूज किया है तो नेक्स्ट ईयर को भी आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूज करना पड़ेगा. उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं विद दैट एसेट तो आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे.
So according to this assumption, whatever the accounting practices you have once selected, you have to adopt that particular practice. You have to apply that particular method consistently year after year. So according to consistency assumption, whatever the accounting process, once you have adopted, once you have applied, once you are starting using it up, you cannot change that particular method. You have to continue with that practice, continue that method consistently year after year. So that is the meaning of consistency assumption. Now coming to the third assumption, that is actuarial assumption. Now what does the actuarial assumption states? According to this assumption, revenue and expenses are recorded in the period in which they became due, rather than when they are received or paid. Means इसका मतलब हुआ, जब भी मैं कोई इनकम अर्न करता हूं या मैं कोई एक्सपेंसेस करता हूं, जिस दिन मैंने उसे करी है उसी दिन मैं उसे रिकॉर्ड करता हूं. Means whatever the transaction which I have done, which is related, either it is related to revenue or related to expenses, whenever I have done, I have to record on that very day, whether it's on the cash basis or on the credit basis. Means मैंने जब भी कोई इनकम जनरेट करी या कोई मैंने एक्सपेंसेस किए, दोनों में से कोई चीज जब भी मैंने करी, चाहे वो मैंने उधार में करी या मैंने कैश बेसिस में करी, उसको मैं उसी वक्त रिकॉर्ड करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्म सेल द गुड्स ऑन 1st July 2020 फॉर ₹10,000 ऑन 2 months क्रेडिट. एक फर्म ने क्या किया, 1st July 2020 को 10,000 का सामान बेचा. कितने महीने क्रेडिट बेसिस पे? 2 महीने. माने 1st July को बेच रहा है. अब उसको पेमेंट कब मिलेगा? 1st September को या 4th September को. सितंबर मंथ में मिलेगा. तो अब क्या वो रिकॉर्ड कब करेगा? 4 सितंबर को? नहीं. वो रिकॉर्ड कब करेगा? कब रिकॉर्ड करेगा? जिस दिन उसने वो सामान बेचा, चाहे वो उधार में बेच रहा हो, चाहे वो कैश में बेच रहा हो. सो देन द सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन 1st July 2020, although the amount will be received in the month of September. तो उसे अकॉर्डिंग टू एक्यूरेट assumption वो रिकॉर्ड कब करेगा? जिस दिन उसने सामान बेचा. तो उसने सामान कब बेचा था? 1st July 2020 को. तो वो रिकॉर्ड कब करेगा? 1st July 2020 को. जिस दिन उसे मिलेगा वो उस अकाउंट को क्लोज डाउन कर देगा ऑन द मंथ ऑफ सितंबर. बट तब तक के लिए वो ट्रांजेक्शन जिस दिन उसने बेचा है वो उस दिन का एंट्री करेगा. तो ऑन द डे व्हेन वी हैज डूइंग द रेवेन्यू और द सेल, whether it's on the credit basis or in the cash basis, whenever the transaction is being done, that will be recorded on that very same day. That is the meaning of actuarial assumption. So इन 3 assumptions के basis पे accounting की books of entry की जाती है. अगर firm नहीं करती है, as I said earlier, तो firm को reason देना होता है why they are not doing it so. Okay, so you might have understood all the 3 assumptions. In the next video, we'll talk about the basic accounting principles, where what are the principles that should be followed while working on the accountancy. Thank you.